Hello guys, welcome back to my sparkling story. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना हेवी वाटरप्रूफ मेकअप कैसे रिमूव कर सकते हो effortlessly. Just a little disclaimer before I begin, I'm going to look very different as most people do look before and after makeup, and I'm completely okay with it. So the very first step is taking off the eyelashes, and the most important thing is to secure them nicely so that I can use them for the next time. Earlier I was very careless, मैं eyelashes remove कर ऐसे ही रख देती थी और अगर एक बार इनकी शेप ख़राब हो जाए तो नेक्स्ट टाइम पेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए नाउ आई ऑलवेज डू मेक श्योर टू पुट देम नाइसली इन देयर पैकेजिंग। इन सेकेंड स्टेप मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का माइसेलर वाटर और इसे कॉटन पैड्स के साथ यूज़ ना कर मैं उसकी जगह इसे रिप्लेस कर रही हूँ वेट वाइप्स के साथ। वेट वाइप यूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि मेकअप रिमूव करते हुए फेस बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है, लेकिन इसके अंदर एलोवेरा प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं तो मेकअप रिमूवल के टाइम पे भी वो आपके स्किन को डबल मॉइस्चराइज करता है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि सिर्फ वेट वाइप से आप मेकअप रिमूव कर सकते हो, सो दिस इज़ ट्रूली रॉन्ग। इसके साथ आपको माइसेलर वाटर या फिर कोई भी मेकअप रिमूवल प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ वाइप से इसे रिमूव करने के बारे में सोचोगे तो मेकअप भी अच्छे से नहीं निकलेगा, प्लस स्किन बाद में इरिटेट भी होगी। एज आई सेड इन अ बिगनिंग ऑफ द वीडियो, ये वाटरप्रूफ मेकअप है और जेल आईलाइनर को मैंने ड्यूरालाइन की हेल्प से वाटरप्रूफ बनाया था, तो ये एक गो में नहीं निकलेगा। आई शेडो पाउडर बेस होता है तो वो एक गो में रिमूव हो जाता है। जेल आईलाइनर को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एयरबड और इस पर माइसेलर वाटर अप्लाई करूँगी और फिर इससे आईलाइनर रिमूव करूँगी। एयरबड सीधा आईलेट पे एम करता है जिसकी वजह से कम प्रेशर के अंदर प्रोडक्ट बहुत ईजिली निकल जाता है। In third step, I'm using Dermapeak cleanser. Always be gentle with your skin. मेकअप रिमूवर यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि सारा मेकअप उसी से रिमूव करना है। ओपन पोर्स में जो मेकअप होता है वो क्लेंजर की हेल्प से ही जाएगा। A. It gently cleanses skin and unclog pores. B. Enriched with pomegranate and vitamin E. C. Contains bioactive cellulose beads. Massage in circular motion and rinse thoroughly. Part 1, removal of makeup has been done. Now it's time for part 2. Here I'm not using towel. Again I'm taking wet wipe to soak excessive water on my face to make it more supple. Alright, so in fourth step I'm taking this toning sheet mask from Dermapeak. It helps in tighten pores and provide hydration. It is from 100% natural coconut water. Though I'm not a very big fan of these sheet masks on regular basis because these are very time consuming things. But yeah, when it comes to remove heavy waterproof makeup, then this is a go-to product, and for instant hydration, it's a must. This sheet mask is quite big and my face is quite not fit for it, but any which ways I have to adjust it for the next 15 to 20 minutes. There is always product left in packaging, so don't forget to take it out. I'm using excessive toner on my hands as well because there is already a lot of product on my face. Instead of my chin, my lips are getting hydration over here, but it's completely okay because sheet mask is too big in size. After 15 minutes, let's remove it. Whatsoever product is present on the face, penetrate it in your skin with the help of your finger. Oh, sorry, I mean fingers. Alright, it's time for fifth step. Here I'm using this glycolic bright serum. It has several benefits. Major one is it hydrates the skin, fades hyperpigmentation, and then it allows penetration of other ingredients. All it requires a circular motion massage as it's a part of my night skincare regime as well.
L'Oreal Paris has come up with a professional range of healthy serums. Here I am attaching a link in my description box, you can also have a look. Earlier, there were not such products required, but nowadays climate is different. We all are living in a polluted environment. Adding such serums plays an important role in your skincare regime. Sixth step is this cellular dry oil from Calabar. I have a combination skin. It acts oily in summer and dry in winter. This weightless dry oil melts into the skin instantly. It can be used in two ways. Add a drop to your daily moisture or foundation to instantly boost its hydration. Well, this is my definition of healthy skin. Many of you will treat it as a greasy one, but this is the best way to prevent your skin from acne and fine lines. Now it's time to lock this moisture by applying a moisturizer. Here I am again using it from Dermafique. So this is the way I roll and this is my personal tip. अगर आप कोई फेशियल ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसे मॉइस्चराइज़र से लॉक कर लें, अदरवाइज़ वो अपना 100% इफेक्ट नहीं देगा और जब आप अपने बेड पर जाओगे तो कभी पिलो कवर पे या फिर किसी और चीज़ पे वो लगेगा और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे. And no matter what, facial massage is my favorite thing to do when it comes to skincare. Whether it's a daytime regime or after makeup regime or anything, facial massage is a must. So अगर आप ये step नहीं कर रहे हो तो let me tell you guys, this is very important. You should start it. जैसे आप इसे स्टार्ट करोगे within like 10 days, 20 days आपको अपने फेस पे वो रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे. स्किन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट लगने लगेगी, ऐसा लगेगा कि देयर इज़ अ बूस्ट इन योर स्किन. फेस पे सबसे ज़्यादा फाइन लाइंस आइज़ के नीचे होती हैं, तो जब भी आप अपने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करो अपने फिंगर से हमेशा ट्राई करो कि आप अपने लाइंस को अच्छे से मसाज दो, जिससे वो टाइम के साथ और डोमिनेंट ना हो बल्कि वो और सटल हो जाए. दिस वीडियो इज़ विदाउट एनी फिल्टर एंड यू कैन सी कि विदाउट मेकअप स्किन कितनी ज़्यादा एक्टिवेट हुई है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिप बाम इज़ मस्ट. This lip balm is from Dior and this is one of my favorites. No matter what, कुछ भी हो जाए ये मेरा कभी भी रिप्लेस नहीं होता है. So no matter कि आपके पास कौन सा लिप बाम है, लेकिन लिप बाम यूज़ करना मत भूलना. सुबह जब आप स्किन केयर रेजिम के साथ उठोगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, बहुत ज़्यादा न्यू होगी and slowly and gradually you will fall in love with your skin. Now again it's a time for tip, take a note on that. आप कितने भी बिजी हो, आपका कुछ भी शेड्यूल हो, लेकिन पूरे दिन में आपको 10 से 15 मिनट्स निकालने हैं अपने स्किन के लिए. और ये था मेरा पूरा आफ्टर रिमूवल मेकअप. नाउ इट्स टाइम टू रिमूव माई ईयरिंग एंड अनक्लच माई हेयर सो दैट आई कैन स्लीप इन पीस विद माई ब्यूटिफुल स्किन एज you all can see. Thank you for watching this video. See you all in my next video. Till then, be safe, be happy. Bye bye.